So today it's going to be a talk about candle magic, and there are certain myths, there are certain questions about what candle magic is, and that's what we'll keep addressing in today's class. And as a giveaway, I will be giving you a recipe or ideas about how you can make your own personal home cleansing spray. If you wanted to cleanse energies of your house, if you wanted to do cleansing of your store or any other place, you can go ahead. Now, I will begin by muting everyone. If you have any questions regarding what we are going to speak today, you can maybe raise your hand. You can put your questions onto the chat, or when I ask you, you can come live and ask your questions. So we will begin with today's session. In fact, I would love it if it becomes interactive, so people who can come on to the video or at least onto the audio, why not? I want you to, in fact, shoot a few questions at you. I wanted to Hello. I wanted to shoot a few questions at you, and I wanted to know from you all that what do you think is really candle magic? How does it work? I want to know from you, what is your idea about doing any kind of candle work? So I would just like to know from where you all are coming in. It's the fire and the fragrance which it gives. Fragrance what? It's the fire energy which works and the fragrance which it gives. Okay, so it's okay. What else? Hello. Yeah, tell me. Yeah, candle magic works. I'm Vishali from Chandigarh. It works Hi. through intention plus 5 elements like Yes. earth, fire, then air, water element, and intention is like the most important. Okay. That's what my idea is. Okay. What else is the most important thing when you go ahead and do any kind of prayer spell or do any kind of spell? Anyone else? Colors, herbs, Yeah. oils. Okay. मुझे तो लगता है कि सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए कि हम जो करने वाले हैं वो वर्क करेगा, क्योंकि वो तभी वर्क करेगा जब आपका ट्रस्ट होगा. विदाउट ट्रस्ट तो वो चीज हम चाहे कुछ भी लगा लें उसमें, बट वो वर्क ही नहीं करेगा. You're I right. said intention first, right? Intention Yes. should be right. Yes. So I'll burst a few things for you today. Number one is you apply the prayer techniques or the magic techniques. It happens when you have an awesome connection with universe or someone in the universe who's a higher power. So it can be a deity, an angel, an animal spirit, a god, a goddess, whoever it is. Your connection should have gotten very powerful with them. And that's when this particular thing starts responding to your energies. What do you essentially do when you go ahead and put in a prayer? You ask for a higher energy to look into this particular matter. I have a prayer for you, and I want you to look into something that I'm requesting. So the request could be for me, myself, and I can make a request for someone who's sitting somewhere else in the world. But I want someone to listen to my request, right? So number one is my connection with the universe. Number one is my connection with a higher being. Number two is like Nitin said, like Pooja Nikale also said on the message, is the faith. What happens at your auric level? आपके aura में क्या होता है जब आप faith के साथ work करते हो?
Like we all know that for an example this is us, और हमारे आसपास हमें ऑरा इस तरीके से सराउंड कर रही है. So aura is all around us. When we are in the state of love, when we are in a state of gratitude, वो aura बड़ी 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 होते जाती है और बड़ी बड़ी पावरफुल होते जाती है. So basically what happens when your aura becomes very big, very mighty, very powerful is you manifest faster. जब हम देखते थे कि पहले के सेजेस थे, ऋषिस थे, उन सब जब भी बोलते थे तथास्तु, तो वो चीज कैसे क्विकली मैनिफेस्ट हो जाती थी. करेक्ट? इट यूज्ड टू हैपन बिकॉज देयर ऑरा इज सो बिग एंड सो पावरफुल कि उन लोग जैसे बोलेंगे तथास्तु, द यूनिवर्स हैज टू रिस्पॉन्ड बिकॉज सो मच ऑफ पावर इज वर्किंग टू आस्क फॉर अ सर्टेन थिंग. इतना बड़ा पावर जब कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो यूनिवर्स को बोलना ही पड़ेगा तथास्तु. That is how the basic idea of this entire thing is. जब आपका faith है, जब आप कोई चीज के साथ, आप higher energies के साथ, जब आपका बहुत ज्यादा faith है इन सारी चीजों में और आप higher energies के साथ एक होते जाते हो, आपकी ऑरा जो है वो धीरे 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 बड़ी होती जाती है. बट हम एक फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं. When we are joyful, our frequencies are rising. When we are fearful, within a second our aura will fall flat and it will stop working for you. फिर अब एनर्जी लगाते रहो, एनर्जी लगाते रहो, एनर्जी लगाते रहो, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है या कोई ना कोई रीजन से हो नहीं पाता. That is the reason why sometimes any kind of working with candle can fail, or any other kind of working or any other kind of healing can fail. So this is one of the reasons. It's not the only reason. So number one, when you go ahead and do any kind of work with candles, आपको सबसे पहले चाहिए कि आपका connection with a higher being बहुत solid और बहुत अच्छा होना चाहिए. Number two, your faith onto that particular thing, that particular energy, yeah, that particular universe. Some people do not believe in any religion. मुझे religion के साथ काम ही नहीं करना, मैं spiritual हूँ, मुझे universe के साथ काम करना है. मुझे पता है कि universe में अलग अलग तरह के lights हैं. I'm going to go ahead and work with the lights. I'm going to go ahead and work with different realms. Go ahead and do it. You need not follow any particular kind of deity, gods or goddesses. That's completely fine. Directly connect with the universe, but build a better connect. So that is number one, and number two is your faith. The minute you know कि ये, when you sit and do any kind of spell work, number one, you're not having any kind of doubts कि ये work करेगा या नहीं करेगा. ये एक मैजिकल फ्रीक्वेंसी है, ये एक मैजिकल एनर्जी है जो वर्क होती ही है. इफ यू डेट बैक तो कई बार ऐसे ऐसे साइटिंग्स, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स हैं विच क्लेम कि ये जो सारी एनर्जी है somewhere has come into existence through certain kind of Indian roots. हमारे sages, हमारे ऋषि मुनि कहीं ना कहीं इस टाइप के रिचुअल्स करते थे, करते आए हैं, जिससे इंस्पायर होके these kind of modalities have come into picture. लोगों ने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, लोगों ने थोड़ा अडेप्ट कर लिया अपने हिसाब से, अपने कंट्री के हिसाब से, अपने सराउंडिंग के हिसाब से, and you start making something out of it. So for an example, अगर मुझे पूछना था आप सबको अभी कि हम हवन क्यों करते हैं और हवन में क्या किया जाता है, what will you say? Answer me. क्यों किए जाते हैं हवन? किसी इंटेंशन को लेके ताकि उसका वो पूरा कर सकें, तो हम उसमें आहुतियां देते हैं जिसको हम मानते हैं कि वो हमारे सेल्फ बीइंग है, जो हमारे हायर बीइंग्स हैं वो उसको एक्सेप्ट करेंगे. जो भी हमें सबसे ज्यादा प्यारी चीजें होती हैं, मतलब इसीलिए जैसे घी का भी किया जाता था क्योंकि घी बहुत शुद्ध होता था और पहले बहुत ज्यादा डेली यूज में यूज होता ही था, तो इसलिए घी का भी बहुत महत्व था उसमें. तो मतलब मुझे यही लगता है.
करेक्ट. सो हवन यूजुअली हम इस वजह से करते थे ताकि हम जहाँ बैठे हैं और जहाँ पे ये सारी चीज हो वहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट की शुद्धि हो. जो लोग भी अटेंड कर रहे हैं उनका भी पर्सनल क्लेंजिंग हो. दैट इज वन ऑफ द रीजंस. सेकंड, हम कुछ लाइफ से निकालना चाहते, कोई रास्ते खोलना चाहते हैं, अनब्लॉकिंग, क्लेंजिंग, या फिर हम लोग लाइफ में कुछ रिसीव करना चाहते, कुछ पाना चाहते हैं. हम लोग को जो मैनिफेस्ट करना है, आज जो मैं कर रहा हूँ वो रिचुअल से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए और वो सारी चीजें मेरी तरफ आने लगे. दैट इज द रीजन व्हाई हवन्स यूज्ड टू हैपन. हवन में क्या होता था, हम लोग सामग्रियां यूज करते हैं. अगेन इट इज अ मिक्स ऑफ वर्ब्स और सर्टेन herbs. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं नारायण के लिए कर रही हूँ तो मेरे herbs कुछ उस टाइप के हैं. अगर मैं माँ दुर्गा के लिए कर रही हूँ तो मेरे herbs उस टाइप के हैं. अगर मुझे रोड्स पे से ब्लॉक्स हटाने हैं तो मेरे herbs उस टाइप के हैं. अगर मुझे लाइफ में मैनिफेस्ट करना है तो मेरे herbs उस हिसाब से हैं. और फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स. मुझे अगर अपनी कनेक्शन बेटर बनानी है तो उस हिसाब के herbs और आहुतियां मैं देती हूँ. नाउ दिस इज द सेम थिंग एट अ वेरी स्मॉलर स्केल. जैसे किसी ने कहा था कि हम एलिमेंट से वर्क करते हैं. दैट इज वन ऑफ द वेज यू कैन ऑल्सो डू योर कैंडल वर्क. कि जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो तो यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं, बट जिस हिसाब से हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट से बनी है, यूनिवर्स में वो 5 एलिमेंट्स मौजूद है. यू कैन कनेक्ट विद ईदर वन ऑफ देम और ऑल ऑफ देम एंड डू योर वर्क. तो जो जो चीजें एनीवे वहां पे प्रेजेंट होती है, तो नंबर 1 इज फायर. द फ्लेम represents फायर. नाउ फ्लेम इज द ओनली थिंग जो कि ग्रेविटी से नीचे नहीं आती, वो ऊपर ही जाती है. तो फ्लेम एंड फायर आर सेड टू बी द वंस जो आपके विशेस ऊपर ले जाएंगे. नाउ फ्लेम स्पेस से भी कनेक्ट करती है और हमारे आसपास एनीवे एयर तो मौजूद होती है, बट उसके अलावा एयर का एलिमेंट हम लाते हैं इंसेंस से. किसी तरह का अगर हम धूप करते हैं, किसी भी तरीके का हम फ्रेग्रेंस लगाते हैं या डिफ्यूजर्स लगाते हैं, दैट इज कनेक्टिंग विद द एलिमेंट ऑफ एयर. सो जब आप कैंडल मैजिक करते हो और या किसी ने किया होगा, यू विल नोटिस दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंसेंस स्पेल्स, where you're using nothing else but only incense to make your spells come alive. ठीक है. सो आप अलग अलग एलिमेंट से तो कनेक्ट करते ही हो और वो एलिमेंट्स आपको सुनते ही हैं. कई बार आप सिर्फ एक छोटी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप अपना पानी सिर्फ एनर्जाइज करके पीने लग जाएं. You will see a great amount of change coming into one direction. Focus your attention only in one direction. ये एक ही चीज के लिए मैं अपना पानी एनर्जाइज करके अगर पीने लग जाऊं, वो पर्टिकुलर इंटेंशन देखो आपकी लाइफ में, आपकी ऑरा में और आपकी बॉडी में कितना पावरफुल बनते रहता है. नाउ दैट इज द बेस ऑफ वर्किंग विथ वाटर एलिमेंट. ये वाटर एलिमेंट के साथ वर्क करने का बहुत बेस है. उसी तरह आप फायर एलिमेंट से भी वर्क कर सकते हो. फायर इज अ वेरी वेरी क्लेंजिंग एलिमेंट. जिस तरीके से वाटर हमें हील करता है, फायर कोई भी चीज को क्लेंस करता है और एक्टिवेट करता है. जो हमारे कई कई श्लोक हैं, उसके एंड में हम बोलते हैं प्रचोदयात. प्रचोदयात मीन्स एक्टिवेट दिस थिंग इन माय लाइफ. इस चीज की फ्लेम मेरी जिंदगी में आप लेके आएंगे. So we are asking prayers, we are asking for things to be coming into our life, to be activated into our life. Now, so number 1, coming back, number 1 है आपका यूनिवर्सल कनेक्शन होना बहुत जरूरी है. कोई भी एक जो आपकी आवाज सुनने में इंटरेस्ट रखता हो और जो आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हो. चाहे वो आपके एंजल्स हैं, चाहे वो आपके गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, कोई डीटीज हैं, बट उनके साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है. नंबर 2 कि आपका फेथ होना जरूरी है. नंबर 3 is setting up of all right things in front of you. I consider that as number 3 or 4 or 5 because इसमें बहुत सारी चीजें आपके अंदर से
पर्टिकुलरली राइट होनी चाहिए उसके पहले कि आप जाके किसी और का या अपना कैंडल मैजिक करें. हमें खुद का क्लेंजिंग और प्रोटेक्शन होना बहुत बहुत जरूरी है. And that is the reason why I chose to give away a cleansing spray for today's class. So अभी तक का मैंने जो भी आपको कुछ भी बताया है उसमें किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह? See, the starting I had missed something. So you had just explained these points. Yes, I had explained only these points. Okay, fine. So जैसे No, मैं all आपको clear. okay. All clear. Thank you. जैसे मैं आपको बोल रही थी what all kind of connections can you build? So आप यूनिवर्स से आप एनिमल स्पिरिट या गाइड से भी वर्क कर सकते हैं. देयर आर पीपल हु वर्क विथ यूनिकॉर्न्स. देयर आर पीपल हु आई पर्टिकुलरली वर्क विथ ड्रैगन्स. आई वर्क विथ कित्सुने, a fire fox animal spirit, and I see great amount of results coming out of it. So आपको पहले ये जानना जरूरी है कि आप कौन से रीजंस के लिए काम कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट व्हाट ऑल कैन यू बिल्ड टू मेक इट हैपन. जब कैंडल मैजिक की बात होती है देयर आर सो मेनी डिविजन्स इनटू इट. देयर आर स्पेल्स दैट यू कैन डू. इट इज डिफाइंड एज कैंडल मैजिक. However, it also has a lot of categories. So a specific category of people who perform magic only with elements fall into more like paganism. There are certain rituals that specifically get into the side of hoodoo. There are certain ways that get into the darker side and become voodoo. And there are people who conduct only and only white magical things. So I particularly get into the picture जहाँ पे सिर्फ white magical things होती हैं, and people use it for good reasons. People use it for energetic reasons. We do not particularly harm anyone, particularly or not particularly. We do not harm anyone. We do not overpower anyone, and yet we get into the scene which is a powerful manifestation. We get into a scene which is a powerful cleanser. Now, it is very important to know that your connection you've set has built and is continuously giving you some kind of results. That is one thing in extra I'm telling you. Now, through candle magic, what kind of things can you do? One is release, one is heal, and one is manifesting. So release में क्या होता है? कई बार हम लोग बहुत जल्दी ये विचार में पड़ जाते हैं, और या भी ये रियलिटी भी हो सकती है कि किसी की नजर लग गई है, किसी ने, या तो मुझे बहुत जल्दी से नजर लग जाती है, कोई टाइप की एंटिटी अट्रैक्ट कर जाती है, या तो बाय डिफॉल्ट किसी ने कुछ कह दिया तो हम लोग बहुत जल्दी से अपसेट हो जाते हैं, या ऐसे किसी ना किसी तरह की नेगेटिविटी अगर हम पे हावी हो रही है. So in that case, one needs to have cleansing. That is just energetic. अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कोई बार बार बीमार पड़ रहा है, किसी को बार बार मनी इश्यूज हो रहा है, so वैसे वाले केसेस में there are two things very very evident. Number one is आपके जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपके जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो आपसे क्या करवा रहे हैं और क्या करवाना चाहते हैं. Then it becomes like a very big task. जब आप कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ काम करते हो, उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखनी होती हैं और उसे एलिमिनेट करनी होती है अपने लाइफ से. और नंबर टू इस क्या मेरा बिहेवियर किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर इस हिसाब से बन रखा है कि the learning I'm getting in my life, it's the same thing coming to me over and over. अगर कोई सेम चीज मेरी लाइफ में दोबारा और बार बार आ रही है, is that something I need to change in myself, and this is a learning for me, is what I need to figure out. Now these are two aspects that need an extensive work with candles. आप कैंडल से अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी वर्क कर सकते हो, और आप अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को
चेंज, मॉडिफाई या एलिमिनेट करने के लिए भी यूज कर सकते हो. नाउ when you sit and do it for your own self, it becomes like an extensive task, because you should be knowing तभी कि आपकी लाइफ में क्या क्या करेक्शंस चाहिए, आपकी लाइफ में किस किस तरीके के रिफॉर्म्स आप लाना चाहोगे, एंड देन यू गो अहेड एंड सिट डाउन. सेकेंड थिंग, जो भी बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि हेल्थ, रिलेशनशिप एंड मनीज, ये 3 प्रॉब्लम बहुत ज्यादातर लोगों में पाई जाती है. उसके अलावा देयर आर वेराइटीज एंड कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम. पीपल हैव इश्यूज विद प्रॉपर्टी, पीपल हैव इश्यूज विद just the bosses, not money but relationships with everyone else. घर का किसी का अच्छा है तो प्रोफेशनल अच्छा नहीं, किसी का प्रोफेशनल बहुत अच्छा है तो घर का नहीं. So there are sub categories into each one of them. So before you go ahead and do it for yourself or others, it is very important कि आपका aura, आपके chakras, आपके हर चीज balanced रहे. So if you are practicing any kind of healing modality, my suggestion is go ahead and start cleansing yourself up. If not, try it with your candles. There are varieties of colors. There are varieties of colors, varieties of shapes and types. But वो सिर्फ टेक्निकल चीजें हैं. जैसे किसी ने आज कहा था कि आपका इंटेंट जो जाता है कैंडल में और कैंडल से जाके यूनिवर्स में जाता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. लाइक आई विल टेल यू वन एग्जांपल. कोई पर्टिकुलर बंदा या बंदी शायद मुझे ऑफिस में तंग कर रहे हैं, ठीक है, एंड आई वांट टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन बिकॉज आई नो आई एम नॉट रॉन्ग. सो ये एक कॉइन है आपका, उसके 2 साइड्स हो सकते हैं. वन इज वेयर यू गो अहेड एंड डिसाइड कि वो बंदा या बंदी को भी परेशानी हो, so that मेरी परेशानी कम हो जाए, वो अपनी परेशानी में बिजी हो जाए. And the second side to that is मेरे रास्ते खुलने लग जाए तो मेरी परेशानी कम हो जाए. कौन सा रास्ता आप चूज करो, that is up to you and up to your karma that you want to generate. But आपको अपने कर्मा हमेशा चेक करके रखने हैं ताकि जैसे जैसे आप आगे बढ़े, दिस इज ऑल्सो लाइक अ प्रैक्टिस दैट विल हेल्प यू रीच हायर एंड हायर. जब आपको अपने साइकिक एनर्जीज भी ज्यादा बिल्ड करने हैं, जब आपको अपने स्पिरिचुअल पावर्स भी ज्यादा बिल्ड करने हैं, तभी भी कैंडल मैजिक काम में आता है. बट द थिंग इज, आपने भी वही सारी राइट चीज करनी है जो कि आपके रास्ते पे चलने के लिए चाहिए. सो दैट इज अनदर रीजन व्हाई you need to keep your karma in check. So it is, some people feel it is completely okay to backfire or to shoot someone down, things like that. I don't think it is okay. So intent जो आप डाल रहे हो कई बार मल्टीप्लाई होके यूनिवर्स में जाता है. इट डिपेंड्स कि आप कितनी इंटेंसिटी से वो पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर इंटेंट यूनिवर्स में डाल रहे हो. कई बार जब आप बैठ के फोकस करते हो वो सारी चीजों पे, वो मल्टीप्लाई तभी के तभी हो जाता है. मैंने जब कभी मेरे क्लाइंट्स के लिए काम किया है या पर्सनल लाइफ में भी कैंडल वर्क का काम किया है, देयर आर टाइम्स जो कि विद इन 1 डे 2 डे या 3 डेज में एकदम धड़ाम करके रिजल्ट आ जाता है. बट देन यू नीड टू मेंटेन सम काइंड ऑफ बैलेंस टू दैट. अभी वो 2-3 दिन में धड़ाम करके रिजल्ट इस वजह से आ जाता है क्योंकि जब वो इंटेंशंस डाले गए थे तब वो मल्टीप्लाई होके काम कर रहे थे, नंबर 1. और नंबर 2 कि वो ब्लॉक्स भी उस तरीके के थे जो अच्छे से आसानी से एलिमिनेट कर पा रहे थे. सो आपके इंटेंस, जब आप एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के साथ वर्क करते हो तो मल्टीप्लाई जरूर होते हैं. सेकेंडली, हाउ वेल यू कनेक्टेड विथ योर डीटी, सो वो एक ध्यान रखना जरूरी है. थर्ड थिंग इज, कई बार हम लोग ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि भैया मैं कौन से शेप की कैंडल यूज करूं, मैं which herb should I use or which kind of an oil. I have developed my own way
of creating spells only out of oil lamps. I don't even use candles sometimes, and they work beautifully well. आपको आना चाहिए कि आप अपने spells को कितनी अच्छी तरह से energize कर रहे हो, number 1. Number 2, right ingredient, yes, matters. But this is a period of lockdown. Right ingredient होते हुए भी कई बार वो आप तक पहुंचता नहीं है. So, क्या आप उसके लिए कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हो जो कि आपके किचन में ही है, आपको बाहर ढूंढने नहीं जाना है? तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल है. कई बार जब हम लोग फॉरेनर्स से या और कोई टीचर से ये सारी टेक्निक सीखते हैं तो उनके पास रूट्स, हर्ब्स, क्रिस्टल्स और सारी वही सजेशंस होते हैं जो कि वहाँ के हैं, और हमें वो दिक्कत हो जाती है कि हम हमारे लिए कौन से हर्ब, कौन से रूट्स वगैरह सिलेक्ट करें. बट ट्रस्ट में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए पहले से ही इंडियन हर्ब्स मौजूद हैं. इनफैक्ट इंडिया में भी ये चीज़ें बहुत सालों से होती आ रही हैं. All you need to do is just start reading about them and start knowing about them. So for an example, जो मैं आज का गिव अवे देने वाली हूँ, let me tell you all how to make your own cleansing spray. उसके लिए आपको सिर्फ इतना चाहिए कि थोड़ा सा एक बोल में पानी ले लीजिए. If you want, you can go ahead and use boiled water. Boiled water नहीं है, that is completely fine. You can use गंगा जल. गंगा जल नहीं है, completely fine. You can take tap water और उसके ऊपर अच्छे से चैंट कर लीजिए. After that, उसमें pinch of हल्दी, आप चाहे तो नमक डाल सकते हो, नहीं डालना है, that is completely fine. You can put little bit of alum, that is fit curry, and little bit of camphor. And that's it. All you need to do is let it settle. अगर आपके पास essential oils है, only in that case you can add lemongrass, or you can add things like frankincense. That's about it. Make it like a shaker spray. जब भी आपको अपना environment, आपका घर का space या तो आपका ऑफिस का space clean करना है, तब आप ये energized use कर सकते हैं. Do not use it in places like bathrooms when you've chanted over it. अगर आपने इसके ऊपर chanting की है तो प्लीज इसे बाथरूम जैसी जगहों पे यूज नहीं करें. Okay, and apart from that, why I always talk so much about cleansing is वही से सारी शुरुआत होती है. अगर आपके लाइफ में prosperity जैसी प्रॉब्लम है, हेल्थ जैसी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप जैसी प्रॉब्लम है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं से ब्लॉक्स की शुरुआत हुई थी. सो अगर ये ब्लॉक्स आपके या किसी और के भी लाइफ में है, फर्स्ट थिंग यू नीड टू गो अहेड एंड डू इज क्लेंज इट. हर जगह से उसे क्लेंज करते जाना चाहिए ताकि धीरे 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 एटलीस्ट एज एंड व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द प्रैक्टिस, इट स्टार्ट्स helping you faster and better way. So apart from that, what can you do? आप एक white candle लीजिए या तो you can take mustard oil. This is something you do on a Saturday. White candle के ऊपर आपको mustard oil लगाना है या तो फिर separately mustard oil का दिया लगाना है. उन्हें अच्छे से energize कीजिए and ask for what you need. कौन से एरिया को क्लेंजिंग की जरूरत है. ये आपने जब कैंडल लगा दी उसके बाद उठ के नहीं चले जाना है. You need to spend your time with candle. You need to spend your time with the spell. Asking for what is it that you need in your life. तो जब आप ये चीज कर रहे हो, वो भी 100% फेथ के साथ कर रहे हो, that means you will start having visions कि ये करने के बाद मेरे रास्ते खुलेंगे तो मैं आगे क्या करूंगा या करूंगी. Start visualizing that. Start giving a way, a road map. अगर इतना स्पेसिफिक नहीं जाना है और कंप्लीट सरेंडर करना है, I would say it is brilliant. Because जब आप सरेंडर करते हो तो you're saying कि you are the smarter energy, you are a higher being, you know what's best.
मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे रास्ते में ये प्रॉब्लम है. You have to open it all for me in the way you think is fastest and in the way you think it is highest and best for me. So today I wanted to be actually talking about cleansing in particular, and that's what I've addressed. I didn't want the session to be very very long. मुझे session को बहुत लंबा नहीं करना था ताकि आप जो भी ले अच्छे से absorb कर पाए. If there are any more questions, I'll be taking them in, or else this is what I had to share with you. Thank you, Siddhi. You're welcome. हेलो, आपने जो इंग्रेडिएंट्स बोले ना जो पानी के लिए, वो एक बार रिपीट कीजिए ना मैम, क्योंकि तभी वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था इसलिए. कैम्फर था, एलम था, एलम यानी फिटकरी, हाँ. पिंच ऑफ हल्दी, पिंच ऑफ सॉल्ट. आप चाहें तो लेमन ग्रास डाल सकते हैं या फ्रैंकिनसेंस डाल सकते हैं. मैम इसमें इनकी क्वांटिटी क्या क्या रहेगी? जैसे आपने फिट उसका बता दिया कि एक चुटकी रहेगा, नमक कितना रहेगा, और फिटकरी जो डालेंगे वो कितनी रहेगी, थोड़ा सा. फिटकरी यू कैन टेक अ पीस, ठीक है. एक बोल जितना पानी अगर आपने लिया है तो उसके ये साइजेस है. सो पिंच ऑफ सॉल्ट, आई डोंट यूजुअली पुट सॉल्ट, मुझे आदत नहीं है सॉल्ट डालने की. एलम का टुकड़ा, कैम्फर के आप 3 टैबलेट्स ले सकते हो. 10 to 12 drops of lemongrass oil, या तो फिर frankincense है तो 5 to 8 drops of that, and I think that's about it. आप चाहे तो इसमें लौंग भी डाल सकते हो because लौंग has a lot of protective ability. So आप उसके 3 टुकड़े डाल सकते हो. Thank you, Siddhi. You're welcome. There's some noise coming from some place. मैम म्यूट कर दीजिए एक बार. हाँ, मैंने सबको म्यूट किया है. अभी जिनको Hi, बोलना है Siddhi. सिर्फ वो अनम्यूट कीजिए. Hello. Hi, Siddhi. Mansi Hi. here. It Yes, was very ma'am. nice. It was very nice, but how frequently we got to cleanse our house? 15 days, 20 days? No, more frequently. More Okay. frequently. अगर आपके घर में ज्यादा blocks हैं, then I would say do it daily. But how do you come to know that there are blocks when there are no problems like? So if you don't know, that means there are no blocks. But कई बार ऐसा होता है ना कि आप काम करने जाते हो, कितना भी करो काम नहीं होता है. कई बार your energy starts feeling very drained, very down, even if you're just sitting at home. You know, these are the signs that you feel that there's something not right either with me or my environment. Okay. जब आप वो पोजीशन पे पहुंचते हो कि जब आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है and I need to address this particular thing into my life, is when you actually start doing it. Okay. तो Okay. वैसे केसेस में आपको रोज करना है, अदरवाइज आप वीकली कर सकते हैं. Okay. Thanks, dear. You're welcome. Siddhi, the water of Sarangpur Hanumanji નું ચાલે? Of course, yes. તો એમાં આ બધું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ નાખવાનું પછી? એ તમે આમ પણ કરશો ને, ચેન્ટ કરીને તો પણ ચાલશે. અવાજ આવે છે, સોરી. No problem. Yes, of course चलेगा वो. How many days can we keep that cleansing spray for? It depends on the kind of ingredients you've used. तो मैंने देखा है कि जब आपने हल्दी या नमक नहीं डाला, you've just made it only with camphor and alum and essential oils, तो वो अच्छे से महीना 2 महीना आराम से चल जाता है. Okay, but when you've used, sorry, If I don't get alum here, I think so. it is I fitkari. only keep, Okay, you Yeah. don't get it as in you're not able to buy it. yeah, we don't get it in the stores. I think I live in US, so I am Okay. thinking I have lemongrass, I have camphor, I have long. Is that enough? Haldi, if you put it, will not stay for long, right? Yeah, and in that case you can add it up with cinnamon, and I'm very sure you get it in US because my cousin stays. You'll have to look it up on Amazon. Okay. I was thinking of the Indian store, so
That is actually water purifier, right? Alum is a water purifier. We usually put in the water It is to a drink the. space purifier. It is a water purifier. It has a lot of purifying energies. It's Oh, not only to do with water. We used to use it in water because it is purifier. okay. So I will Hello. try to make it with cinnamon, camphor, and long and lemongrass. Yeah. So I'll tell you one more interesting fact about alum. तो ऐसा कहा गया है कि wherever there is some vastu dosh, some corner of your house is not right according to vastu, take a bowl and put alum into that corner. Every week, just keep discarding that alum into your basin or however you want, and keep putting new alum in its place. This is the simplest vastu remedy for you. Oh, okay. मैम Maybe एक there बार are. दोबारा रिपीट कर दीजिए, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो किसी के घर में अगर वास्तु दोष है तो ऐसा कहा गया है कि जो भी कॉर्नर आपका सही नहीं है या नेगेटिव है या मिसिंग है, वहां पे आप एक बोल में थोड़ा सा एलम रख दीजिए, फिटकरी रख दीजिए. एवरी वीक डिस्कार्ड इट. चाहे आप बेसिन में डालें, चाहे आप फ्लश करें, जो भी करें, उसके जगह नया एलम रख दीजिए, नया टुकड़ा रख दीजिए. So Siddhi, when we are using this alum piece, we need to break it down into a powder and then discard it, या हम as it is discard कर सकते हैं? Yeah, you can discard it as is. That's completely fine. Don't get Do into you touching all that. recommend a size, like some size? Like I don't know how I it looks. recommend like 1 to 2 inches piece. So Oh, it comes would in be like, pieces. Okay. so it comes into a powdered form also. You need to see which form you get over there, and that's okay to keep powder. It's okay to keep it as a whole. It's completely no issue at all. What we Oh. have to chant on the water then? Yeah, I So, also wanted to know this, Siddhi. What we have. sorry, I accidentally muted you. Can you please speak again? The lady who was speaking last. What we have to chant? I'm Nisha here. Chant. So again, who are you connected with the most? I'm connected with my goddess energies the most. I'm connected with my Kuldevi who's Chamundama. I'm connected with her the most. तो मैं उनके chants करती हूँ. Alternatively, you can, and I always suggest because I see them working in my life and others' life. Apart from that, my Kuldevta is Hanumanji. So मैं उनके chants भी करती हूँ. So any one of them you can choose, and this is what I have to offer right now because I know their work and I've seen them work. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है आपके कुलदेवी, आपके कुलदेवता है, उनके चांट्स करने आप करो. आपको लगता है आपको सिर्फ एंजल्स के नाम बोलने हैं उसके ऊपर, प्लीज डू दैट. दैट्स कंप्लीटली फाइन. Hello, Siddhi. Okay, thank you. Siddhi, can we use a spray bottle to do the cleansing of the house? Yes. So you transfer it to a spray bottle and just, that becomes easiest. Yeah, and can we keep in the fridge, like if we use it for over a month without using haldi and salt, can we put the spray bottle inside the fridge? So if you're making it, don't let it sit in the fridge for a month. Use it. Okay. Yeah, use No, it. if you're using it every day, and in so can we like every day we can just remove it from the fridge and use it? Yeah. Yes. Hello, Siddhi. Hello. Yes, please ask. Hello, Siddhi. Yes. Yeah, with the lemongrass, there was another herb also you mentioned. That Your voice is not coming clear. Can you speak again? Can you come again, please? In the second part, now you had mentioned one herb along with lemongrass. Hello. Yes. Can you try now? Yes. Speaking. Hello. Yeah. I think there is some There's some weird background with your Yeah, voice. some noise is some coming. noise is It's there. like something swirling in your back. So You hear me now? just Hello? okay, let me do one thing. Let me mute everyone else. And when you are speaking, you unmute yourself. Yeah. Now you try. Unmute yourself first and then you try speaking.
Hello. Yeah. Hello. Can you hear me, Siddhi? Yes. There's some sort of noise coming. I think that is coming from your end only, but it's okay. Maybe Just try maybe the speak. laptop or the mobiles are connected to each other. That is the time the sound comes. Are there two devices you're using? No, I'm using only one device, the laptop. Okay, so be very close to the device so we hear your voice louder than the disturbance. Okay. Or else you can write it down onto the chat. Yeah, I'll just write it down and send. Sure. Siddhi, one more thing. As you Yes. said for the mustard oil thing, I said either we can use white candle or a mustard oil. Diya, you meant no, the mitti ka diya. Yes. And you said to energize that mustard oil diya. So how to energize the diya? Do you practice any kind of modality? No, I don't. In that case, just chant over it. Like I actually strongly believe in Ganesh ji and Hanuman ji mainly. Lovely. And I do like every day like part in the morning of I do Hanuman Chalisa. I do all the Hanuman ji se related things, and well, these few things I do. And one Durga ji ka Durga ji ke ek roop hai. I do that also. Mm-hmm. So and then I do aartis mein generally Hanuman ji, Durga ji and Ganesh ji starting with. हाँ, nice. So So see, आपने तीनों ही बहुत powerful deities choose किए हुए हैं. Hanuman ji is a very great protector and he unblocks your roads like how. And I've seen it happen. Okay. In and fact, my we have Kuldevta is someone on also our Hanuman ji. Yes. So Hanuman ji या फिर और कोई चाहिए ही नहीं. I believe that way. And I do there's someone Baglamukhi else Chalisa also. also in the morning. See, what else why do you need a spray? No, because there are relationship problems in the house. That is one of the reasons I was like, it's not like I'm doing this since ages. Okay. But if you I do, wanted calmer energies, no, all these three are very powerful and high frequency energies. If you wanted something calmer, in your house, in your spray, do not you can maybe add rose water so it has that fragrance of rose in it. Okay, you can put Okay. some rose petals or some kind of rose fragrance into it, essential oil, and you can start chanting Lakshmi Ma's chants. She has calmer Lakshmi and Ma chant. subtler. Yeah. And when it comes to marriages, it's her energies that will work for you better. Okay. So Lakshmi Ma, any specific chant or like? Whichever you feel connected with, I'm connected with Sri Suktam. Okay. Yeah. Just it's Sri Sukta, that's it. It is a stotra. It's not like one small chant. So you Okay. can 1 to 3 stotrams on top of your water should do the magic. And in fact, मैं सिर्फ week में 1 Friday 1 Sri Suktam भी करती हूँ. I feel very elevated with that. Okay. Yeah, it's Could you very repeat that powerful. Very stotra again? Sri Suktam. Sri Suktam. So what all goes in this spray? You said rose water and Rose petals and rose water is what I essentially said, or essential oil of rose, so that it gets those calming energies in the house. Yeah, Siddhi, can we use clove oil and camphor oil instead of camphor tablets? Yes, of course. Yes. Any format of your herbs. So you use herbs as whole, or you use them as a powder, but powder will stick into your spray bottle. So you'll have to filter it out, or you go ahead and use the essential oils. Those are the best. I have that clove oil and camphor oil. Superb. Thank you. You're welcome. सिद्धि इससे पोछा तो नहीं कर सकते है ना? नहीं, मैं चैंट वाटर से पोछा कभी नहीं करती हूँ, and I find it little disrespectful. So I also request कि ऐसा मत करो. But I spray it all onto the walls. I don't spray it on the floor. Okay. एंड लेमन ग्रास ऑयल के बजाय हम एक्चुअल जो लेमन ग्रास खाते हैं उसको हम वाटर में बॉईल करें तो will that You be can do it, but strain it because आपके स्प्रे बॉटल में वो फंसेगा.
ओके ठीक है, थैंक यू। You're welcome. Can you tell me the other spray? Ma'am, One is rose water and the other one is? Hello? Hello? Yeah, please ask me. Sorry, is there someone speaking something? I'm not able to hear. Sorry. I was speaking. Can you hear me? Can you get little louder than this? Just one second. I'll adjust the volume if there's anything. Yeah, please tell me. Yeah, I was asking. Can you hear me now? Can you hear me? Sort of. So I was asking. Sort of. One is the rose water spray, which is the other spray with lemongrass, and what is that for? So the rose water spray, I told her for her relationship. Okay. The lemongrass spray is for the cleansing of your house, or cleansing of your office, or cleansing of any space that needs a little bit of addressing. So what all goes in the lemongrass spray? So you can put camphor, you can put alum, haldi, pinch of salt if you like. I don't usually end up putting salt. Okay. मैम लेमन ग्रास का भी कोई सब्स्टिट्यूट है जो हमें अपने ही मिल जाए कुछ ऐसा? Clove. हेलो सिद्धि मैम। हाय। How are you? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल। आपकी आवाज इतनी अलग होती है कि पता चल जाता है it's you. सच में? मेरी आवाज ही पहचान है। एकदम। मैम बहुत अच्छी लगी सारी बातें। अच्छा, मैं रोज वाटर के बारे में पूछने जा रही थी तो वो आपने बता ही दिया। ओके। तो रोज वाटर का जो हमें स्प्रे करना है तो वो सिर्फ रोज वाटर या उसमें भी ये सारी चीजें हमें इंक्लूड करनी है? तो अगर आपको लविंग एनर्जीज के साथ आपको थोड़ा क्लेंजिंग भी करना है, then you can go ahead and put some camphor tablets with rose. Okay. That is completely fine. Absolutely no issues. और मैम हम क्लींजिंग के लिए सेज भी बर्न कर सकते हैं? हाँ, so क्लेंजिंग के लिए बहुत सारे इंसेंस आप बर्न कर सकते हो। सेज है, I use Palo Santo and I see great results with Palo Santo. आप Palo Santo भी यूज कर सकते हो। आप जो हमारे इंसेंस रेजिन्स आते हैं, यूजुअली गूगल है, लोबान है, you can use them in the evening and like run it through your entire house. तो मैम पालो सैंटो एक स्टिक होती है जैसे, तो वो एक बार में पूरी खत्म कर देनी है जब तक वो खत्म नहीं, वो आपका घर बस पूरे फ्रेग्रेंस और स्मोक से भरे उतना ही चाहिए आपको। एक बार में पूरी नहीं करनी। जैसे सेज भी आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, जैसे पालो सैंटो आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। और मैम एक मैं ये टॉपिक से हट के क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? ऑफ कोर्स। तो जैसे कि कहते हैं कि हमें अपने एंसेस्टर्स को हमें रोज खाना खिलाना चाहिए, पानी अच्छे से सब कुछ उन्हें ऑफर करना चाहिए, तो फिर हमें उस चीज का, जैसे हम उनको खाना दिया और हमने उनको सब कुछ दिया, चाय वगैरह, तो उस चीज का हमें क्या करना चाहिए बाद में? ओके। पर्टिकुलरली मैं क्या करती हूँ, मैंने कोई भी चीजें ऑफर की, मैं हमेशा जब मेरे स्पेल्स होते हैं कुछ ना कुछ ऑफर जरूर करती हूँ। और मेरे, जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव स्पेल्स ही होते हैं, that means all the things that are energized are also energized through positive energies, correct? वो चीज है, मेरे घर पे रेगुलरली बर्ड्स और एनिमल्स आते हैं और खाते हैं, रेगुलर, एवरी डे दिस हैपेंस। एंड दैट फूड, सो अगर मैंने फ्रूट दिया है तो वो फ्रूट कौवा खाता है बाद में, या कोई मंकी खाता है। अगर मैंने कुछ और चीजें दी है तो मैं ऐसी चीजें ऑफर करती हूँ जो मैं बाद में इनको खिलाती हूँ। आई डोनेट दोस थिंग्स, ताकि जो भी क्लाइंट या जो भी करा रहे हैं उनको इसका फायदा मिले। हाँ, वही चीज मुझे लगा, क्योंकि जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने मुझे बोला कि नहीं पेड़ के नीचे ही रखना है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि वो तो सब वेस्ट हो जाएगा। वो वहाँ एंड्स आके खाएगी, डोंट वरी। अच्छा, तो मैं रख सकते हैं पेड़ के नीचे सब कुछ? पेड़ के नीचे क्या होता है, कई बार अगर आपने नेगेटिव स्पेल किया है ना, और वो सारी चीजों में नेगेटिव एनर्जीज है, then you cannot feed it to someone else. It's not right. What you're giving out to the universe is a negative energy. That's not right. इसीलिए फिर बोलते हैं 4 रास्ते पे रख दो या पेड़ के नीचे रख दो। बट व्हाट आई ऑलवेज डू इज, जैसे मैंने कहा था कॉल के बिगिनिंग में, एक ही कॉइन है, 2 साइड्स है।
अब वही चीज को स्मार्टली पूछ सकते हो, मांग सकते हो, करेक्ट? ठीक सो उस हिसाब से करना है Hello. और फिर आप वो ऑफर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। Hello. हाँ जी। Yeah, Siddhi, I just wanted to know anything can be done on for Amavasya. Yes. In So anything anything Amavasya particular. is a day which is called the new moon day, after which a completely new month starts, correct? So it is the day of new beginnings. Okay. Number one, energetically or non-energetically, if you know, there used to be rituals in India also where we used to cleanse the entire house. Yeah. So that all the stagnant energies go out. All the cleansing just 1 second, I'll mute others. All the cleansing rituals when you want to do, it is Amavasya day. Or all the new beginnings you want to have in your life has to happen on that day. Hi, Siddhi. Hi. Just one more query. As you said about the rose water thing, so when we do the rose water for good marital relationship, married relationship, so that means we're not supposed to add that separate water and alum and camphor lemongrass. It's just rose water with camphor. So you can use rose water, you can use camphor, you can add rose oil into it. If you wanted to bring in more cooperation and harmony, you can put some lavender oil into it. Okay, but do we need to add water in the rose water, the normal water? No, so if you take the base as rose water, do not need to add something else to it. Okay. So we can have two separate like sprays, one for the cleansing of the house and then one more for the harmony Relationship and harmony. yeah. So in that So the- relationship harmony, we can only put rose water, or I have rose water as well, and I have the rose essential oil as well, and lavender oil as well, and camphor as well. So what should I do? Mix them all and make your blend. Okay, I can add rose water with rose essential oil also. Okay, and how many drops of essential oils? Lavender and So rose? you can put like 10-11 drops of rose oil and about Okay. 5 drops of lavender. That should work. Okay, 5 drops. And camphor, I've got tablets. Yeah. So 3 tablets would be like enough? Yes. Okay. So this blended together in a glass bowl would be better? And then I can So transfer it. sometimes you have the liberty of putting everything into the bottle if the neck is big. Then you don't Okay. need to waste another bowl. Then you directly put everything into the bottle, start energizing. But the plastic of the bottle does not let you energize. It does Okay. not send your vibrations in. Then maybe you put your hand or just do it before and then transfer is also Yeah, because completely generally the spray bottles are plastic only. So once we do it in a glass bowl, we can energize and then we can transfer it. Yeah. And that energy stays in the plastic bottle. Yeah. Okay. Thanks. I'll try this. Thank you so much, Siddhi. Thank you. You're welcome. I will just for a second read everyone's chats. I think I'm completely missing out on that. Oh, okay. So you've been asking. I think almost the questions are same. Thank you, Sejal. Okay, yeah. So one more thing, Siddhi, this only the relationship. This is like this will heal or help with husband. What about with children, child? Will yeah. this So work for child rose is the also? energy of unconditional love and forgiveness. Okay. So unconditional love and forgiveness could mean any relationship in your life. Whether it is your mother, daughter, father, son, husband, wife, anything. It gives you those calming energies. Okay. So it works for all relationships. Yes. And is there any particular time to spray or any time of the day? Yes. I usually do it in the mornings. You can choose to do whenever you like. Okay. Thank you. Thanks a lot, Siddhi. You're welcome.
Siddhi, for the cleansing spray, Hello, you ma'am. lemongrass and Frankenstein. Should we use both or either one of them? If you have both, you use both. If you don't, you can use either one of them. You don't need to go out and buy in particular. Whatever you have at your home, go ahead with it. So even if we skip both of them, it is okay, right? Or we can infuse it with little lemongrass water, as you told someone else. See, you can simply chant over the water and use that also. You don't need anything more. If your power, your intent, your chants are powerful, it'll do the magic. You do not need anything more. And that's what I was telling someone else. कि अगर आपका connection बन गया है कोई deity से, you don't need to go extensive doing your rituals. There's so many things anyway we end up doing. So when it comes to magical rituals, no, you end up doing candle spells, diya spells, you do incense spells, you make mojo bags, you make talismans, you make charms, you make powders, you make your own anointing oils. I teach all these things, okay? But at the end of the day, I say that you use your mind, you use your working, you use everything according to your own personality and what you have in your kitchen. You don't need to go out and get very extensive. You just need to know your art well. You need to know your craft well. You need to get creative instead of falling into a particular format of this is the method of making it and this is how it should be. Okay. Thank you so much. Okay. Hi, So, Siddhi. I'm hi. Sangeeta. Hi. Thank you for adding me in the group. This is the first time I'm here with you, and I really don't know what all you are covering. I'm a counseling psychologist myself, but I think your field is very different. But actually, I would like to know what really you are dealing in, and what kind of things then we can put up, and then you could answer. So today is my first time, so I'm sorry. I mean, I'm just naive about That's everything that okay. you are doing. So I keep So, conducting different kind of seminars, webinars of okay. what all I practice. So giving a little bit of introduction, I was 15 when I started astral traveling, not knowing that I was doing it. I was 16, 17 when I started dream interpreting, getting into Reiki, crystal Oh, really? therapy and stuff like that. Okay, great, great. And then I put an end to it for a while because I wanted to build my career somewhere else. But somehow I got pushed back into this destiny, I think. Yeah. So I teach about angels. I teach about candles. So this is an entire modality of candles, not only candle spells, but to conduct your own oil lamp. And this is what we all are talking about today. Yeah, yeah. There are varieties of rituals, varieties of ways that you can do for your home, others' home. Then I do numerology readings, I do angel card readings. One thing that I'm coming up with a connection with the dragon spirits and reading their cards, connecting with different animal spirits, working with different realms. So, yeah. Okay, that is great. I can see some great talents in you. I mean, I too was It dealing is into a great completely many different. things, handling, with different. I did Reiki myself. I'm a very spiritual person as it is, but then I'm really enjoying what you are telling me is something very new. So Yeah. thank you so much for adding me here. So I would You're like to always connect with you and maybe ask a couple of things Sure. later on, maybe not today. Yeah, thank Sure. you. No problem. Thank you, Siddhi. Thank you a lot. Thanks a you. lot. You're very sweet. Your way of teaching is really good. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. So, everyone else, that is it for today. I'll come Are you back with from something Delhi new. or Mumbai? Are you from Delhi or Mumbai. Mumbai? Mumbai. Yeah. Yeah. Okay. Good. Yes. I Nice sort of, connecting with you. my Thank you so sister much. lives in Delhi, but I don't really connect so I'm much also with in Delhi. Mumbai. I do a couple of things here. Yes, I'm a singer. I'm a voiceover artist. So just trying to cope up with many things together. Wow. Yes, nice. Yeah. So nice meeting you. Thank you so much. My pleasure. Thank Siddhi, you. Yes. Siddhi, one last thing. When we
chant over the water, can we have like we say Om Ganpataya Namah? Can we have Ganesh Ji as well as Hanuman Ji chants over the water, like two gods at the same time? Yes. Who am I speaking with? Nidhi, Nidhi, Nidhi. Okay, Nidhi, let me tell you one thing. First of all, this doubt or so many questions you have no in your mind, put them to rest and listen to me only for 2 minutes. Okay, then you can Okay. go ahead and do whatever you like. I can do 5 chants if I want in the water. Absolutely no issues. I can put 5 words. I can go as extensive. There are 1 or 2 students from my class, and you can ask them the kind of oils I make. I go extensive. I'm like get very generous, but that's not the idea. I have to give it out to so many people. That's why I get generous. When I do it for myself, what I do when doing it for others also, but if I was to do it for myself, I don't go extensive. I'm like intent. Okay. Intent is all that matters. Okay, so even if you work only with Ganesha, even if you worked only with Hanumanji, but if you felt very bad inside you saying कि नहीं उनको बुरा लग जाएगा, in that case just go ahead and do it. Trust me, they don't feel bad. So they don't even conflict between each other. That never happens. But this is something we carry inside us. And when you're sitting and doing it, no, I don't want you to have a speck of doubt. Okay? So go all out. That point of time you think that you want to go ahead and do 50 things, go ahead and do it. But do not do with a speck of doubt, is all I need to tell you. Okay, got it. There should be no doubt in your mind. It's like with complete faith and whatever we do. Yeah, that is how you'll go with full power. Because if your energies are these, you start chanting, you start building bigger energies. And if you'll doubt, it'll just fall flat in a second. And I don't want you to be working with these things when your energies are very low. I want you to be working with these things as you elevate yourself, as you climb higher. And that kind of power you will be putting into your spray that you're making. Okay. I got it. Yeah, absolutely clear. So one more thing, when you said for mustard oil, you said you need to sit with the diya till the time the diya is like burning. So that like completely... No, not till the time the diya is burning. You need to sit respectfully for 5 more minutes, 10 more minutes, 15 more minutes. If your diya is quite big, you'll not end up spending your day like that, right? Okay. But need to give some time. Yes. Yes. I got it. Thank you so much, Siddhi. Good information and really very calm way of explaining things, you know. It's very nice because because as a layman, we have so many questions running in our mind. And when you explain it with that calmness, it really matters. Thank you so much. Thank you. I'm sorry to interrupt, but I would, Siddhi is the best teacher in the world, I would say. Thank you. Nobody can teaching, really. She's so people who are new here, Sejal ji is learning candles with me, candle therapy, the very same. Jaya was also here, who's learning it. Nitin is learning angels with me. Let me see if there are more people. Radhika is also. I completely agree with Sejal. Very, very. It's a blessing to have her as a guru because she handles it so calmly. Because we are normally very excited. But whenever we go to Siddhi, we don't come back without any solution. I can assure you that. Thank you so much. And she will answer all the questions. So she's so calm, like कभी irritate नहीं होती है. जैसे हम लोग स्कूल में वो बच्चे टीचर को पूछते तो डर लगता है कि टीचर गुस्सा हो जाएगी. That's really nice. You know, when a teacher explains things, what happens with the lockdown, with the overloaded work, even if a child asks simply for something, we are so highly irritated that it's like it shows on our face, on our body. And talking to Siddhi with her calmness, no, that was really nice. How she maintains it, I really don't know, but it was actually amazing. I don't know. I think this is how I am. Sorry, क्या पूछ बोल रहे हो आप? It is okay. It is okay. Ma'am, may I leave? अगर session complete Yes, हो गया sir. तो?
सेशन खत्म है, मैं भी Thank लीव ही you. कर रही हूँ. Thank Thank you, you. ma'am. Thank you. Thank you. Bye to all. God bless you, ma'am. बाय बाय. थैंक यू God मैम. bless you too. बात करके So, हमेशा अच्छा लगता है, हमेशा अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव. thank you. So today my prayer to the Lord is to bless all of you and Thank you. start building your better connects Thank you. with other energies. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Bye-bye. Bye. Thanks, Siddhi. Bye-bye. Thank you. Thank you.